यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield.
old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय
Government Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio. Cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra. Production companies Gaumont Lee Films Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio. Cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra. Production companies Gaumont Lee Films Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old
Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon, outside the United States, is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon, outside the United States, is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee
Films Dupilhin. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट फिल्म्स ड्यूपिलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट फिल्म्स ड्यूपिलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes
and 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज
Gaumont Lean Films Duplin. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million. बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million. बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million. बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an
Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra,
Music by Eric Serra. Production company Gaumont Lee Films Dupilhin. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट ली फिल्म्स ड्यूपिलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट ली फिल्म्स ड्यूपिलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994. French 18 November 1994. United States. Running time entertainment country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the
film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूपलिन. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon, outside the United States, is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूपलिन. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon, outside the United States, is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी
Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International, release date 14 September 1994, French 18 November 1994, United States and Taiwan Entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्वाया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट ली फिल्म्स ड्यूपेलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International, release date 14 September 1994, French 18 November 1994, United States and Taiwan Entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learn the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्वाया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट ली फिल्म्स ड्यूपेलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International, release date 14 September 1994, French 18 November 1994, United States and Taiwan Entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली
Tilted the Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Films du Duplain, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली Tilted the Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvain Lendra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Films du Duplain, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली Tilted the Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics.
आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गोमेंट ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल, रिलीज डेट 14 सितंबर 1994 फ्रेंच, 18 नवंबर 1994 यूनाइटेड स्टेट, तैवान एंटरटेनमेंट कंट्री फ्रांस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गोमेंट ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल, रिलीज डेट 14 सितंबर 1994 फ्रेंच, 18 नवंबर 1994 यूनाइटेड स्टेट, तैवान एंटरटेनमेंट कंट्री फ्रांस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गोमेंट ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल, रिलीज डेट 14 सितंबर 1994 फ्रेंच, 18 नवंबर 1994 यूनाइटेड स्टेट, तैवान एंटरटेनमेंट कंट्री फ्रांस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल
originally tilted the professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूपलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally tilted the professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूपलिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally tilted the professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his
Prodigue and learned the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूस बेशन, रिटन बाय ल्यूस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learns the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूस बेशन, रिटन बाय ल्यूस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. Language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learns the hitman's trade. The film was released in French by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूस बेशन, रिटन बाय ल्यूस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनीज गोमोंट लीन फिल्म्स, ड्यूपलिन. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France,
लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय लुइस बेसन, रिटन बाय लुइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूपिलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल। रिलीज डेट 14 सितंबर 1994 फ्रेंच, 18 नवंबर 1994 यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम एंटरटेनमेंट, कंट्री फ्रांस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय लुइस बेसन, रिटन बाय लुइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक सेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूपिलिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल। रिलीज डेट 14 सितंबर 1994 फ्रेंच, 18 नवंबर 1994 यूनाइटेड स्टेट्स, रनिंग टाइम एंटरटेनमेंट, कंट्री फ्रांस, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $45.3 मिलियन। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield.
old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvia Landra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvia Landra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 France, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio, cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvia Landra, music by Eric Serra, production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by
Government, Buena Vista International, release date 14 September 1994, French, 18 November 1994, United States, running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूप्लिन, distributed by Gaumont Buena Vista International, release date 14 September 1994, French, 18 November 1994, United States, running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learn the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नताली पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीज फिल्म्स ड्यूप्लिन, distributed by Gaumont Buena Vista International, release date 14 September 1994, French, 18 November 1994, United States, running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million। तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes
and 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment country France, language English. Budget $16 million, box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. लियोन द प्रोफेशनल originally titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she became his protege and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक ल्यूडॉक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो. सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा. प्रोडक्शन कंपनी
Gaumont Lean Films Duplin. Distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalie Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Oldman, Leon, and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learns the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेसन, रिटन बाय ल्यूइस बेसन, प्रोड्यूस्ड बाय पैट्रिक लुडोक्स, स्टार्टिंग जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन, नतालिया पोर्टमैन, डैनी एलियो, सिनेमेटोग्राफी थैरी अर्गोबास्ट, एडिटेड बाय सिल्विया लेंड्रा, म्यूजिक बाय एरिक शेरा, प्रोडक्शन कंपनी गोमोंट लीन फिल्म्स ड्यूप्लिन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994 French, 18 November 1994 United States. Running time entertainment. Country France. Language English. Budget $16 million. Box office $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लियोन द प्रोफेशनल हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। लियोन द प्रोफेशनल ओरिजिनली titled The Professional in the United States in Lyon outside the United States is a 1994 English language French action thriller film written and directed by Louis Besson. It stars Jean Reno and Gary Oldman and features the film debut of Natalia Portman. The plot centers on Leon Reno, an
Italian-American professional hitman who regularly takes in 12-year-old Matilda Lando Portman after her family is murdered by corrupt drug enforcement administrator DEA agent Norman Stansfield. Old man Leon and Matilda from an unusual relationship as she becomes his prodigy and learned the hitman's trade. The film was released in France by Gaumont Buena Vista International on 14 September 1994 and received mostly positive reviews from critics. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ल्यूइस बेशन, रिटन बाय ल्यूइस बेशन, produced by Patrick Ludox, starring Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Elio. Cinematography Thierry Argobast, edited by Sylvia Lendra, music by Eric Serra. Production companies Gaumont Lee Films, Dupelin, distributed by Gaumont Buena Vista International. Release date 14 September 1994, French 18 November 1994, United States. Running time entertainment, country France, language English, budget $16 million, बॉक्स ऑफिस $45.3 million. तो दोस्तों हम अपनी मूवी के रिव्यू का आज यही समाप्त करते हैं. आप मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.